talking about the cascading style sheets, है ना? And basically हमें इठी देखिलो कि cascading style sheet is responsible for the presentation, that is the look and feel. जो तुम्हारा वेब पेज रो स्ट्रक्चर बनेला परे ताकू सेटा केमती देखा जाए. So how does it look and how you can design that. ठीक है. So that is what CSS does. And along with HTML, which gives the structure, CSS gives the presentation. We also will be looking at JavaScript, which gives us the particular behavior or how a particular web page behaves over here. So we began with the definition for CSS per se, because we need to know what the CSS actually does. So we saw that it is basically a language to describe how documents are presented visually. Okay. ମାନେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ସେଟା ତାକୁ describe to describe it, that is the language that is used. So the visual aspect से केमती देखा जिबो depends upon तार arrangement हैला से कोठी I mean like को जगह से हमें से particular element को रखिबा and तार styles कौन है पर. So CSS stands for Cascading Style Sheets, and तार गोटे problem हम देखिलो CSS में that गोटे particular property को alter करने पे we have lot of properties, so very difficult to remember all the properties, but then our task is to remember the overall properties that I mean I can just take and then modify later on. आमे तापर देखिले the CSS rule or basic structure, which consists of the selector हैला, and selector भितरे हमें गोटे rule दोच. So rule कौन property colon value. So गोटे particular property को हमें धरिबा और तार गोटे particular value हमें present करिबा एथरे. So ए selector property value रो केतरा example हमें देखिले तापर. For example, h1 color is purple, हैला. So basically all headings h1, this is the selector. So कौन select करछु जेतरा भी h1 element थिबो से web page रे ताको select करिवो. And then we have the color is purple. So property is the color is the property and purple is the value. So eta would example am dekhile. And then we saw suppose we want to modify all the images in the particular page. So here img, this is the selector, okay, and here width and value. Width is the property and 100 pixels is the value. You know, at height is the property, 200 pixels is the value. ये बढ़िया हमें rule लिखी पारिच है ना. एटा आउट एग्जांपल हमें देखिलो एथरे एटा टिके स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल टिकी हमें देखिलो सिलेक्टर हमें गोटे पर्टिकुलर एचटीएमएल फॉर्म रो केतरा एलिमेंट्स को स्टाइल करूछु. सो ये एग्जांपल रे हमें प्रति even text field को select करूछु है ना. So we have selected every even text field and तारा गोटे border 2 pixels रो border एटा हमें देछ है ना. So these are some examples of CSS rules हमें केमती यूज करि परिबा. ठीक अछि. सो एटा जो मुटा डिस्क्राइब करूथली is प्रति जो property अछि CSS property तारो multiple empty types tha हैला. So very difficult to remember everything, but we will try to remember the important portions. तापर बहुत important concept हमें एठी देखो जो is how do you include these styles into your web page. So तीनटा method हमें देखिलो एठी. First method is the inline style, जोटा कि हमें style attribute यूज करके हमें डायरेक्टली से रूल टा लिखि परिबो. स्टाइल एट्रिब्यूट पर्टिकुलर HTML एलिमेंट रे यूज करके लिखि परिबो. बट द प्रॉब्लम इज inline styles apply to the particular element only. The particular element जो थरे inline style attribute हम ऐड करिछु सेतरे ही
सेटा अप्लाई हो पारता है. सो सपोज यू हैड बहुत गुड़ा h1 टैग्स तुमर अच्छी तो तुमको प्रति h1 टैग रे से स्टाइल एट्रिब्यूट ऐड करबा पड़िबो एंड दिस इज नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल. हैला. तो what is the other alternative is to use the style element. So usually हमें कौन करूँ style element को head section रे हमें रखी था है ना. So HTML मन रखिबा HTML कौन कौन अच्छी गोटे हेड अच्छी गोटे बॉडी अच्छी राइट. सो बॉडी रे हमें जो कंटेंट ब्राउजर रे देखा जाए ताको बॉडी रे हमें रखो आउ हेड रे जनरली वी पुट सम पर्टिकुलर इनफॉरमेशन लिंकिंग इनफॉरमेशन हो किंबा तार मेटा इनफॉरमेशन में ता पेज रो विषय रे जो इनफॉरमेशन अच्छे टाइटल हो मेटा हो से हमें रखो हेड रे. So style also can be put in the head section and हमें जहाँ भी रूल सेठी लिखुछु will apply to the entire page है ना. Now this is good if you want to have a single page. तुम गोटे पेज अच्छे से तुम स्टाइल अप्लाई करबा चाहछो सेटा हे परिबो. But again if tomorrow more than 10-15 pages अच्छे then very difficult to copy all the style elements to all the head sections. It becomes very difficult. So tomorrow if dynamic website अच्छी मान multiple pages tomorrow एंट्री जनरेट होची then सबुथरे जाके style element paste करबा is also a difficult task. So what is the best alternative? The best alternative is the third option, external style sheet. So तुम put a .css file create करबा and where you put in all of the styled rules and then you link it to your web page. Okay, you link it to your web page using the link element. Okay, so this is the recommended approach and this is generally the recommended approach how to do these things. तापर हमें ये example भी हमें देखिलो how गोटे style sheet को .css file को केमती हमें link करि पारछु गोटे page संगे है. So that's what we have already done. केतरा example हमें already देखिलो especially pertaining to the Bhubaneswar web page हमें बनने की हमें देखे है ना. So this is all that we have covered till the last class. Yeah, okay. So तापर आज हमें we will start off with the discussion talking about CSS colors or what how to include colors in your web page or how to include colors over here. So before I start with color, दुईटा आमर property रहुची गोटे रहुची color आ गोटे background color. So simply if we talk about color, okay, simply if we talk about color, what is it, and if we talk about background color, then what is it? So we'll try to see the difference in both of the cases. So मोइथरे MDN documentation MDN documentation रे दुईटा link देछि. So let us see first color हमें देखिवा है ना. So if we are using the CSS color, okay, if we are using the particular CSS color, just a minute. Okay, so if you are using the CSS color, so CSS color कौन करे sets the foreground color. Okay, माने text और text decoration जहाँ भी हमें लिखो जो तारो color से दे था over here है ना. For example एठी देखो color is Rebecca purple है ना. So ये जो text एठी अच्छे तारो color change हो जो suppose एटा हम देखो जो तो आर कलर जो टेक्स्ट रो कलर सो खाली कलर लिखले दैट एक्चुअली मींस टेक्स्ट रो कलर हैला खाली टेक्स्ट रो कलर एथरे चेंज होता है. ठीक अछि हमें पर देखिबा ए सब ए डिफरेंट काहे के लिखा है छी सेटा हम पर देखिबा. बट द आईडिया इज खाली कलर जोटा हम यूज करछु इज जनरली फॉर द टेक्स्ट कलर. ओके, आ गोटे प्रॉपर्टी हमें देखिबा इज द बैकग्राउंड कलर. So background color, if हम देखो छो, it does not modify the color of the font की text. It modifies the actual background. So paragraph हो कि div tag हो section हो article हो. So एक केस रे देखिबा background color is brown. थे background color change हो. So the element रो color टा background color आउ simply color टा होची text रो color. That's a major difference that you must remember over here. So so हमें एटा गोटे देखिबा एथरे let's see I have some examples मु चेष्टा करबी ताकू तुमको देखेबा पई.
So let's see. This is a very simple HTML page. ଆମେ ଦେଖିବା ତାର different portions. You can see right over here head ଅଛି, meta tag CSS demo. Body ଭିତରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି h1 hello world, h2 this is subheading, button ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି ଆମର, ଆଉ ଗୋଟେ head subheading, button ଆଉ paragraph. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ଦୁଇଟା paragraph ଅଛି, ଠିକ ଅଛି. So if you see the HTML output, okay, how does the HTML look like? Okay, so HTML output ଆମେ if ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ just double click करके देखिवा. So this is the page. Okay, this is the page. Alright, so ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏଟା simultaneously ମୁଁ ଏଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ. Okay, so this is the HTML. Hello world ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଟା heading 1, ଏଟା subheading 2, button, subheading ତାପରେ button ଆଉ paragraph ଏଠି ଅଛି ହେଲା, ଦୁଇଟା paragraph ଆମ ପାଖରେ ଅଛି. This is the first paragraph ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ଆମର second paragraph ହେଲା, ଦୁଇଟା paragraph ଆମ ପାଖରେ ଏଠି ଅଛି. So if you go back to this slide, ଆମେ କେତେଟା ଜିନିଷ ଏଠି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ is so style the given HTML. କ'ଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେତେଟା ବି h1 ଥିବ ସେଇଟା ହେବ green color, ଆଉ ଯେତେଟା ବି h2 that is the subheading ହେବ magenta, ହେଲା, green magenta. ଆଉ paragraph ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ହେବ white color text ଆଉ background black background ହେଲା, ଆଉ button କ'ଣ ରହିବ red text pink background. So this is the structure हमको दरकार. हमको HTML already दिया है इसे इतरे, तो मैं देखो जो इतरे HTML आओ as मु देखेली हमको first हमें गोटे गोटे करके ताको solve करेगा. आओ आप ये दुईटा property use करेगा, गोटे color आओ background color. At least for h1 and h2 हमें color property use करके ताको modify करी पारेगा हैला. So एटा मु कौन करेबी is I will create a CSS file. एठी हमरो CSS file तो हम देखि पारुछो, ठीक अछि. Let us delete it हैला, so that हमें आउ थरे ताको करि परिबा. And okay, so एथरे तो हमें देखुथबो is link tag एठी अछि. So आमे ए स्टाइल शीट को लिंक करूछु. ए स्टाइल शीट एक्चुअली गोटे CSS फोल्डर भितर अछि, CSS हैला, css1 app.css हैला, एटा लिंक हे जाई छी. And now let us modify this CSS. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया होची कि h1 should be green color text. तो फर्स्ट हमको सिलेक्टर यूज करबा अछि, h1 is the selector हैला. ता भितरे हमें देई परिबा तारो रूल हैला, कलर हैला, और कलर होची ग्रीन, कलर होची ग्रीन टेक्स्ट लिखा है, मैं डायरेक्टली एठी ग्रीन लिखी. सो जो कलर हमें स्पेसिफाई करू HTML रे, देयर आर डिफरेंट वेज हाउ वी कैन स्पेसिफाई कलर. और द सिंपलेस्ट वे इज जो कलर रो ना लिखि दबा डायरेक्टली. सो ए केस रे मैं ग्रीन डायरेक्टली लिखि ए केस हैला. सो सेव करबा एटा, सेव करके आई विल जस्ट रिफ्रेश दिस पेज. देखिबा हमर रिजल्ट होछ ना, तो मैं देखि पारुछो hello world is green in color, right? Okay, next हमें देखिबा h2 को we will make it magenta हैला. magenta भी गोटे टाइप ऑफ कलर. सो जेतरा भी h2 अछि पेज रे ताको हमें magenta करिब. So h2 is color magenta. Okay, magenta. Save करिवा and let us refresh.
देखुच this is the subheading 2, this is the subheading, so दुईटा हम देखुच has become magenta looks like pink है so ता देखि पारुछ तो next जो next हमर जो criteria अछि टिके complex अछि let's see, it says paragraphs जेतरा अछि तार white text black background, paragraphs रो white text and black background. So paragraphs को केमती हमें सिलेक्ट करिबा राइटिंग p होचे paragraph आ हमको दुईटा जिनस को हाइची व्हाइट टेक्स्ट आ ब्लैक बैकग्राउंड कलर पे मु जहा कहउतली तुमको दुईटा हम पखरे हातर रूल अछि गोटे होची कलर सेटा मॉडिफाई करे टेक्स्ट कलर तापर अछि बैकग्राउंड कलर जोटा हमर मॉडिफाई करे ए जो बॉक्स रो कलर ठीक अछि. So first हम background color को modify करिबा background color is to be black ठीक अछि. background color हमर हला black. Question रे हमको से पचरा है जे background color should be black तापर हमें white text आनिबा हला. So color is white हला. Save अब देखिबा कौन इफेक्ट आछि पैराग्राफ ऊपर. So refresh अब तुम देखुछ black background ऊपर white text. Next what we have is buttons. So buttons हमको केमती करिवार अछि red text with pink background, red text with pink background. So button को select करिवा पय we'll use button okay. And the first हम background color लिखिबा background color हमको है pink, so pink and color which is the text color है ना, text color should be red ठीक है red. Save करिबा and then let's see how does it look like. Refresh बताऊँ देखुछ both are red in color also ठीक है. So this kind of solves our question. So आमे देखि पारुछु कि आमे color और background color use करके हमें different properties modify करि पारि. So this brings us to the question कि आमे जो color लिखुछु एई केस पे मु कोन करली is directly color ना सब लिखिले है ना, green magenta black white pink red एमती मु देली है ना. But एई सब color is very limited है ना, बहुत limited अच्छे ये सब color माने ये जो वर्ड कलर वर्ड सब लिमिटेड बहुत अच्छे. सो आमे अबे देखिबा इज आमे को बढिया भाबरे ना सब देई परिबो कलर. तो फर्स्ट आमे देखिबा ना सीएसएस रो ये जो जंती मु ना धरु छ रेड पिंक ग्रीन एंड एवरीथिंग. सो सीएसएस रो केतरा कलर्स अछि हैला, कलर नेम्स रहि छ. सो एमटी हमरो कलर नेम सब अछि. एटा गोटे मु लिंक ऑलरेडी देई छी, तमे से स्लाइड नेला पर तमे डायरेक्टली एटा यूज करि परिबा. ए साइट रे दिस इज कॉल्ड एज द एचटीएमएल कलर कोड्स. तमे देखि पाछो रेड रो केतरा वेरिएंट्स अछि. सो इंडियन रेड, लाइट कोरल, साल्मन रेड, इज नॉर्मल रेड, पिंक ऑरेंज येलो पर्पल. सो एंती बहुत गुडा तुमको पैलेट्स मिलबो है ना. सो ऑलमोस्ट मे बी 140 केतरा एमती तुमको कलर्स मिली पारे डायरेक्टली जहां ना अच्छे. सो मॉडर्न ब्राउजर सपोर्ट 140 नेम्ड कलर्स है ना, 140 नेम्ड कलर्स हो रही है ना. सो ये ना सब कलर साइट जो ना लिखा है दैट इज द नेम्स ऑफ दोस कलर्स है ना. सो तुम सेटा यूज कर परिबो. नहले आ गोटे हमर अप्रोच अछि टू यूज आरजीबी है ना. बिट ऑफ फिजिक्स इज इन्वॉल्वड ओवर हियर. RGB जोटा होची is something called red, green and blue. Physics रे तमे पढिथिबो red, green और blue होची प्राइमरी कलर्स ना. red, green and blue प्राइमरी कलर ସେମାନେ मिसिले व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करंती. आउ जेतके मात्रा रेड ग्रीन संगरे मिसिले रेड ग्रीन संगरे मिसिले येलो हुए. आउ ग्रीन ब्लू संगरे मिसिले व्हाट डू यू गेट green blue संगरे मिसिले I don't know, this is cyan or something maybe. तापरे रेड आउ
red or blue मिसले pink. So you get different माने levels of colors है ना RGB ସେଥିଲାଗି ତାକୁ red green and blue ତାର different quantities ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ. This is the color model. तो ଏଇଟା यूज करके हमें जनरेट କରିପାରିବା कलर्स. तो जनरली RGB को हमें एमती डिफरेंट टाइप्स रे लिखि थाउ. एठी तमे देखुछ RGB लिखा ହେଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ तीनटा नंबर्स दिया है. So first one signifies R red, green and RGB. So generally the values move from 0 to 255 है माने each value है ना 0 to 255. एमती तुमको बहुत गुड़ा कलर्स मिल पाए. So 000 could be white, 255 255 could be black. So ये बढ़िया तमरो था. So sometimes it becomes very difficult कि randomly थोड़ी तुम ठीक कलर numbers दो. So to help you out we actually have something called a color picker. Okay, we have a color picker over here. So you can pick these colors. So तुमे गोटे particular color choose करि परिबो हैला. color choose करके ताको डायरेक्टली तुम कोड रे लिखि परिबो. So एटा जे तुम देखि पारछो एठी मु क्लिक कले हमको ए गोटे कोड मिलु एथरे हैला कि तुमको रेड ग्रीन एंड ब्लू रो डिफरेंट वैल्यूज मिल जे 217 182 174 एटा सब डिफरेंट वैल्यूज हमको एठी मिलु छी. प्लस तुम एटा भी चेंज करि परिबो हैला. इस स्लाइडर टा भी चेंज करि परिबो to choose different values of colors. So it is a follow website that you can refer to while you are doing the web design. है तुम choose कर परिबो ई केस. ठीक है. So आपको color picker को आजा जो that helps you to choose the color palette है जो the color combination जोटा तुम website रे यूज करिवो सेटा पई हमें कलर पिकर यूज करो. तो ये जो मु तुमको एग्जांपल देखौथली एथरे जब हम कलर पिकर जब यूज करू जो हम गोटे हेक्स आसुची हेक्साडेसिमल कोड गोटे आसुची हैला. सो ए कलर्स रो गोटे हेक्साडेसिमल कोड पे था. सो आइदर तुम ताको तार ना यूज करि परिबो हैला दैट इज द नेम्ड कलर बट सेटा बहुत लिमिटेड ऑलमोस्ट ओनली 140 अछि. बट इंस्टेड ऑफ दैट आइदर तुम RGB यूज कर परिबो जोटा होची रेड ग्रीन आउ ब्लू रो कॉम्बिनेशन आउ नहले तुम हेक्साडेसिमल कोड यूज कर परिबो. सो हेक्साडेसिमल कोड एक्चुअली कोन सेटा हम टिके देखिबा. सो देयर आर रेड ग्रीन एंड ब्लू चैनल्स जेमति मु कहउतली एटा तुम फिजिक्स रे पढितबो. सो रेड गोटे पार्ट ग्रीन गोटे पार्ट ब्लू गोटे पार्ट तार कॉम्बिनेशन रे हमको बहुत गुडा कलर्स मिले. each range from 0 to 255 हैला. आउ ए 0 to 255 को हमें हेक्साडेसिमल कोड रे हम रिप्रेजेंट करू. सो हैश लिखो छ तापर प्रथम दुईटा डिजिट इज रेड सेकंड दुईटा डिजिट इज ग्रीन आउ नेक्स्ट दुईटा डिजिट इज ब्लू. सो दैट इज द हेक्साडेसिमल कोड that we use to represent the color. So एटा गोटे एग्जांपल हम देखिबा. सो 0f hexadecimal code I hope you remember. It has 0 रो जाए केते f जाए केमती 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I think तापर a b c d e f ना hexadecimal number system तो मैं अगर पढ़ी थेबो. सो नंबर सिस्टम तुम रिवाइज कले तुम जान पारो. सो एथरे हम लिखुछु 0f5679. सो दिस गिव्स दिस कलर ओवर है. सो ए कलर टा से क्रिएट करूछु हेक्साडेसिमल कलर यूज करूछु. ठीक है. सो बिफोर वी प्रोसीड देयर इज अ स्मॉल क्विज. जेमते मु कहउतली एठी कि रेड ग्रीन ब्लू गोटे मेथड हमको कलर देबा पई तीनटा चैनल हमर अछि RGB हैला. वैल्यूज रेंज फ्रॉम 0 to 255. सो हमें रेड को 200 ग्रीन को 100 एमती वेरिएशन कले एटे पर्टिकुलर कलर आसे ओवर. सो एठी जो गोटे क्विज तुमको मु एठी देखौछि. सो यू नीड टू सजेस्ट ओके यू नीड टू सजेस्ट एज टू ए कलर ए जो तुमको देखा जाउछि एटा कोटा हेतो whether
आपको हमें देबा ए एटा बी सी आउ डी है सो एटा को जिनसटा हे पारे व्हाट कुड बी दिस कलर ए बी सी आउ डी ओवर हियर पर्टिकुलर क्वेश्चन ठीक अच्छे सो आगर मु तुमको ये कहली कि जो आमर आरजीबी अच्छी है सो आरजीबी एटा हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू so each value ranges from 0 to 255 if mu 25500 आ माने होचे एटा this is red in color हैला ए RGB मु जोटा कहूची 00255 it means this is blue काहे कि एटा एम्प्टी हबो बिकॉज़ ए दुटा 0 रहला एटा 0 एटा 0 एथिरे एटा 0 आउ एटा 0 आउ एटा देखो 173 23 22 माने रेड रो एतिकी परसेंटेज ग्रीन रो एतिकी परसेंटेज तो कहि बेनी बट रेड रो ए पर्टिकुलर एतिकी शेयर अछि दिसरे वी हैव ब्लू एंड देन वी हैव दिस इज अ कॉम्बिनेशन of it 000 so taken into taking this consideration हमें एटा देखिबा this is a sort of green shade हैला so if green shade हबो then एटा मने रखबे प्रथम टा होचे रेड एटा ग्रीन एटा ब्लू हैला so एठी हम देखो ग्रीन इज 0 हैला गोटे तो अलग कलर आनिबा हमें let's see let's see this red green and blue so एटा तुम देखो जो red is 255 blue is 255 green is 0 माने एटा definitely तुमरो green हेबो ना because green टा 0 अछि next हम देखिबा is 00255 so एथरे red 0 अछि green 0 अछि blue 255 so this actually is blue so not green हमको पचरा है कि एटा ए ग्रीन केमती हो हैला 255 एटा भी हेबो नाही आउ सी हम देखु जो 0400 एथे प्रॉब्लम हैला ए जो 400 अच्छा हैला 400 टा is basically heaven because I'm कहूँ value is between 0 to 255 0 to 255 जो value रहुची so 400 एटा भी हेबो नाही so what is the answer 0 200 0 so the answer is D the answer is D because the red टा 0 रहिला blue टा 0 रहिला green रो particular shade पाए हमें 200 use करते so 200 is the particular shade of green color over here in this particular case over here right? so एटा गोटे particular question तो मैं I hope तो मैं बुझी पारछो if there is a issue you can always let me know okay how would I देखिबा is which of the following hex color codes is equivalent to RGB 255 255 255 so एटा again एटा मन रखिबो RGB stands for red green and blue आउ individually red रो value होची 0 to 255 blue रो value भी 255 b रो value भी 255 आउ एठी हमें गोटे कंडीशन मु तुमको कहली इज ए दुईटा रेड को सिग्निफाई करे ए दुईटा ग्रीन को सिग्निफाई करे आउ ए दुईटा ब्लू को सिग्निफाई करे हैला सो से दृष्टि रो इफ यू सी 255 255 255 दैट मींस इट इज द हाईएस्ट हैला दैट इज द मैक्सिमम एटा नो सो 000 तो हेबनी so 255 255 will be this and this so this is so if we have A B and C so C is the correct answer for this so RGB 255 255 255 is equivalent to hash FF FF and FF over here okay so this is all about colors तो मैं माने एटा कलर्स विषय देखिले हला सो ए जो मो एथरे जो लिंक देछि सो एटा तमे जरूर देखिबो रेड आरजीबी कलर मॉडल को तमे बुझिबो आ ए कलर नेम्स को बुझिबो कलर पिकर यूज तमे करि पारे हैना दिस इज अ वेरी गुड साइट फ्री साइट थ्रू
तमें जमती हेले you go through. Now RGB model विषय टिके बेसी बुझिबार अछि तो you can refer to this Wikipedia page for the red green blue model. ठीक अछि. So the next ଆମ ପାଖରେ styles ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେଖିବା is basically the css text properties. Okay, so we have the css text properties. So ଆମର ରହିଲା text align, font weight, text decoration, line height ଆଉ letter